Welcome dear students, welcome to the session 2023-24. We are extremely pleased to announce that we have decided to accomplish a task of completing your English syllabus. So welcome again BA first semester students. So we know that it's the beginning of your journey in the university level, right? So you might be having many apprehensions related to the English language. So in order to have a good understanding about the English so that you score the highest possible marks at the university level, and you also understand the English in essence, right? So for that task to accomplish, we have decided to teach on this particular platform. So the very first thing about your book is that your curriculum is that the very first essay that is given to you student is the good manners. Why good manners? Well, so before we discuss what good manners are, we need to look at this particular book. So I would request you people to bring a book if possible and a notebook with you. So having notebook is mandatory before studying, right? So I hope that you have brought notebook. If you haven't brought it, so please bring it with you, and because we are going to say something, we are going to teach you something, so you have to make notes of that. That would be very beneficial for you when it comes to your examination point of view, right? So Jammu University and the other universities are very strict in as far as the curriculum is concerned. So we hope that you people will pay heed to our lectures in a proper manner, so that you do not miss anything, do not skip. Neither your train is going anywhere nor mine train is going anywhere. So we have to sit and relax and focus on our studies, right? So before we discuss, if you have a book, so you might have noticed your book is not book, your English book is not book, it's an anthology. So what is an anthology in English? Anthology is a book, is a collection of written works written by different authors and published in one single book. एक ऐसी किताब जिसके अंदर डिफरेंट राइटर्स के पोएम, पोइट की पोएम्स और डिफरेंट राइटर्स के एस्से लिखे हों और उनको कलेक्टिवली लिटरेरी वर्क को एक बुक में पब्लिश किया जाए, उस बुक को हम इंग्लिश में कहते हैं एंथोलॉजी. सो व्हाट इज़ एन एंथोलॉजी? एंथोलॉजी इज़ अ बुक कंटेन्स रिटन मटेरियल रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स. आपका देख रहे हैं जेसी हिल ने गुड मैनर्स लिखा है, दूसरे तीसरे अलग अलग राइटर्स हैं, सबकी अलग अलग हैं, ये किसी एक राइटर की किताब नहीं है. तो इस तरह की किताबों को हम कहते हैं एंथोलॉजी. तो आज के बाद अब you are supposed to call your book as an anthology of, okay, your book is an anthology. So I hope that you have understood what anthology means. So coming to the next important thing, good manners. So before we discuss anything in English, we are supposed to justify the title. Why J.C. Hill has chosen the title good manners? What is the significance of choosing the title good manners? Because the titles are not chosen randomly. Titles are not chosen, whatever come in your mind, but titles are chosen very carefully because the title reflects what's inside the essay, right? So you might be wondering why I'm calling good manners an essay, right? So in English, so you people, you might be thinking that essay is something morning walk, science and technology. Well, okay, it's okay to call those piece of writing as essay. However, these prose writing are also essays, because the literal definition of the essays is essay is a piece of writing especially written in the prose form on a particular subject. Okay, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, किसी एक टॉपिक के ऊपर प्रोज फॉर्म में अगर कुछ लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं एसे. तो यहाँ पर हमारा देखें क्या गुड मैनर्स एसे कहलाने लायक है? यस, ये गुड मैनर्स जितना लिखा है सारा प्रोज फॉर्म में लिखा है. इसमें कोई पोइट्री में, शायराना अंदाज में नहीं लिखा है, सिंपल लैंग्वेज में राइटर ने लिखा है. पहली एक चीज़ होगी ऐसे के लिए कंडीशन पूरी कि वो प्रोज फॉर्म में, मोस्टली प्रोज फॉर्म में होता है. दूसरी कंडीशन क्या है ऐसे होने के लिए
कि वो एक टॉपिक पर बात करता है, उसी के ऊपर उसी की एडवांटेजेस वगैरह बात करके तो उसी के आगे रेमेडीज़ देता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, गुड मैनर्स, एक टॉपिक जेसी हिल ने चूज़ किया और सिर्फ गुड मैनर्स पर ही बातें की हैं, उसी पर एग्जांपल दी हैं और बताया है कि हाउ सिग्निफिकेंट इट इज़ टू हैव गुड मैनर्स, राइट, टू हैव अ म्यूचुअल गुड रिलेशनशिप इन द सोसाइटी, राइट। सो गुड मैनर्स को हम ऐसे कहेंगे, राइट। सो इट्स एन ऐसे, गुड मैनर्स, रिटन बाय जेसी हिल. So let's come to the biography of the author. So good manner, why the title is chosen? Because it entirely talks about the good manners, having what is the significance of having good manners. So the title is extremely good and suitable if we look at the content of the J.C. Hill. So the title is absolutely justified, right? So let's talk about the biography of the author. So let's talk about the author versus writer, because it says that about the author. और English में दो term होते हैं, एक author एक writer. Sometimes people overlap these two terms. However, author is different from the writer and writer is different from the author. So let me briefly explain what writer stands for and what author stands for, because if you are going to study English in a professional manner, you have to have the knowledge of author and writer and all these basic concepts. So who is an author? Author वो होता है जो कोई किताब लिखता है और वो ऑफिशियली पब्लिश होती है और पूरी उस किताब की जो क्रेडिट है वो खुद लेता है, राइट। वो उसी की किताब होती है, ही ओन्स दैट पर्टिकुलर कंटेंट, राइट। राइटर क्या है, कुछ भी लिख लिया, मैंने कुछ लिख लिया वो भी राइटिंग, आपने कुछ लिख लिया वो भी राइटिंग। हालांकि राइटर जो लिख रहा है वो राइटर तो है, बट वो राइटर ऑथर कब बना कि जब उसका वर्क ऑफिशियली रिकग्नाइज किया गया, ओके, एंड ही ओन्स दी ऑथरशिप, कि उसने वो लिखा है, उसने ओन भी किया है, उसको रिकग्नाइज भी हुआ ऑफिशियली। तो ये डिफरेंस है ऑथर और एक राइटर के बीच में। एनीवन हु राइट्स इज़ अ राइटर, बट समवन हु राइट्स and writes as a profession and his work is published and recognized officially, he is an author. So I hope you have understood the difference between author and a writer. So let's talk about the biography. The famous writer John C. Hill, 1888 1943, birth date 1888 and 1943, is a famous British writer, right? He has written a few things on the various factors constituting what good manners are. He was educated at Harrow and Trinity College and was eventually ordained as a priest. J.C. Hill's Good Manner is an extract from his famous book An Introduction to Citizenship. Okay, अब ये जो है आपका गुड मैनर्स जो है ये J.C. हिल साहब ने एक पूरा लिखा हुआ था, एक पूरी बुक थी, उस बुक से एक एक्सट्रैक्ट, एक टुकड़ा उठाया है गुड मैनर्स, जो आपके इस बुक में आपको प्रोवाइड किया। आखिर आप ही को क्यों प्रोवाइड किया है आप जानते हैं? डू यू नो वाई गुड मैनर्स इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश करिकुलम? बिकॉज whenever you grow up, whenever you grow up, your naughty behavior also grows up, right? So at the teenage, students are tend to be more violent and more, in some cases, if they are not as respectable to the most of the youth. They are not as respectable to the elders of the society as they are supposed to. Like if they are having bike, just हॉर्न बजाते ही जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि मे बी को आगे बुजुर्ग कोई चल रहा है, कोई बहरा भी हो सकता है, उसको सुनने में नहीं है, चाचा पीछे चल 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 इधर उधर. So they do not have patience, right? So there are umpteen number of examples. If you are in the bus, so most of the students, they won't leave the seats for the elderly. तो आपको सोचना चाहिए, आप जवान हैं, आपके अंदर ताकत है, आप you can bear, you can stand, but not the old man. So you must leave the seat immediately for the elder, for any elder person, if there is an elder person in the bus, right? So इसीलिए ये गुड मैनर्स आपको इंट्रोड्यूस किया गया है कि इस स्टेज में स्टूडेंट थोड़ा इन चीज़ों को नहीं समझता जब तक वो थोड़ा मैच्योर नहीं हो जाता, तो इसलिए आपको ये गुड मैनर्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया है कि पहले आपको ये पता चले, क्योंकि लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट लाइफ, और एजुकेशन के साथ साथ जो इथिकल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ भी जो आपकी ग्रो कराई जाती हैं वो इस लिटरेचर के ज़रिए करवाई जाती हैं, राइट? तो इसलिए आपको गुड मैनर्स दिया है,
राइट. सो एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप बुक जो इनकी लिखी गई थी जेसी हिल साहब की, इनकी बुक का एक टुकड़ा, एक एक्सट्रैक्ट उठाकर गुड मैनर्स जो उस पर पर्टिकुलरली लिखा गया है वो आपकी बुक में यहाँ इंट्रोड्यूस किया. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है याद रखनी. एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप. द essay talks about the manners one should have in the society. He emphasizes the value of cordial relations amongst one another. ओके और ये अपने ऐसे में एम्फेसाइज करते हैं, जब हम आगे ऐसे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें ये एम्फेसाइज करते हैं कि कितना कॉर्डियल, एक दिल का रिलेशनशिप इंसान का क्यों होना चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है आखिर. राइट. तो इसके बारे में तो अब अबाउट द ऐसे क्या है. अबाउट द ऐसे जब हम लेक्चर 2 में जब ऐसे का वर्ड फॉर वर्ड जो उसको पूरा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे. ब्रीफ समरी की कोई ज़रूरत नहीं है, फुली एक्सप्लेनेशन में समझेंगे ताकि आपको कभी एग्ज़ाम में ना भूले और आप खुद अपने से भी इंग्लिश बनाकर इसको लिख सकें. वी विल ट्राई टू इन्हांस योर वोकेबलरी, वी विल ट्राई एवरीथिंग possible to let you know the unfamiliar words, and we will also upload videos related to your enhancement of the vocabulary, so that when it comes to the examination you achieve more, because English is the key. Because when you know the English, when you have the knowledge of the English, so the other subject like history, chemistry becomes easy. You get to know everything, you understand everything, so it save your time and energy, and it also fetches you good marks, right? So we will do everything possible. So meeting you, thank you very much for hearing patiently, for giving patient hearing to this lecture. We'll meet you in the next lecture and we'll read the text word for word. Thank you very much once again.